Good evening to all, and thank you for joining us. On behalf of Bajaj Finance Limited, I'd like to welcome you all. Friends, it is a continuous and consistent endeavor to bring latest news and knowledge from the world of mutual fund industry for our customers and viewers, and for which we keep inviting leaders from mutual fund industry to come and share their expertise and knowledge with us. So, for that, today we have with us Mr. Sorbh Gupta, Senior Fund Manager, Bajaj AMC, who will talk about the NFO of Bajaj Finserv Large Cap Fund. Sir, I'd like to welcome you for today's session. Thank you, Rohan. Thank you for inviting me. It's a pleasure to have you, sir. Uh, friends, Mr. Gupta has a rich experience of over 16 years in investment banking. Prior to Bajaj Finserv AMC, he was a fund manager in Quantum Asset Management for over 11 years. He managed $1 billion in domestic and offshore funds dedicated to Indian equities. By qualification, he's a BCom, a chartered accountant, and a CFA. Friends, today's session is all about the NFO of Bajaj Finserv Large Cap Fund. Before we start, and for better understanding of our viewers, I'd like to quickly explain what's an NFO. Well, friends, NFO stands for New Fund Offer, which is the initial sale of a mutual fund scheme offered by a fund house. NFO allows the fund house, like Bajaj Finserv AMC, to accumulate corpus, which the fund manager, like Mr. Sorbh Gupta, can use to build a portfolio which aligns with the investment objective of the scheme. The subscription period of NFOs is generally 10 to 15 days, which is called the NFO period. And the NFO period for Bajaj Finserv has already started. It started on 29 July and will be ending on 12th August this month. Well, friends, second thing which I like to quickly talk about is what are large cap funds. Well, friends, large cap mutual funds invest 80% of their portfolio in large cap companies. Large cap companies are top 100 Indian companies in terms of their market capitalization. And by definition, any stock to qualify for as a large cap has to have a market capitalization threshold of around rupees 84,000 crores. A very unique thing with respect to large cap companies with respect to their mid cap and small cap is that they're fundamentally very strong and are financially stable and can offer a potentially stable return and withstand market fluctuations with respect to mid cap and small cap companies. Well, friends, it's a very interesting category. This category has grown over 39% in 1 year, 18% in 3 years, and around 19% in 5 years. Well, friends, in today's session, Mr. Gupta will talk to about the features of their large cap fund, difference of Bajaj Finserv AMC's large cap fund with respect to other competitors, what is their concentrated approach for this particular fund, what is the in-queue philosophy which Bajaj AMC follows in their investment process, and how this particular fund can become the part of investors' portfolio in the current market scenario. Friends, please be very attentive. And at the same time, if you have any questions, keep commenting below. And in the end of the session, Mr. Saurabh will answer all the questions. So without wasting much time, I'd like to hand over the stage to Mr. Saurabh. Sir, I would request you to please take it ahead from here. Thank you, Rohan, and thanks for inviting me. Interesting times. Finally, there is some volatility in the markets. Yes, yes, So, sir. let us start with what is causing this volatility and how should one think about it. तो उस बारे में थोड़ा बात करते हैं. Let's talk about last 15 months before starting the presentation. Let's talk about last 15 months. What has happened is that the markets have been on uptrend without much volatility, and investors are very excited about that, and that's good. In the last 3 months, there have been three big news that has market has absorbed and moved forward. For example, सबसे पहले तो बात करते हैं जून 4th जून का इलेक्शन आउटकम इलेक्शन रिजल्ट्स. Not as per expectation, markets went down. Then things stabilized politically. Markets again moved up very nicely. उसके बाद जुलाई में we had budgets. Some people had expected कि capital gains tax increase होंगे, तो वो हुए भी. Markets again went down, stabilized and moved forward. But finally we are seeing
a reasonable bit of volatility coming in last few days in the markets. Why is that happening? So आप सभी ने पढ़ा होगा, it is because of Japanese yen, right? So how is Japanese yen creating volatility in our equity markets and globally? So I'll just explain it for 2 minutes so that you understand the context of what is happening globally. देखिए क्या होता है कि जापानीज येन और जापानीज मार्केट्स, वर्ल्ड का लोएस्ट इंटरेस्ट रेट्स इज प्रोवाइडेड बाय जापान. द इंटरेस्ट रेट्स आर जनरली 0.1 0.2%. लोएस्ट इंटरेस्ट रेट्स वर्ल्ड में यू विल गेट इन जापान. And Japanese currency always depreciates because their central banker wants it to be depreciating, right? So globally, the hedge funds or the large funds who work on leverage, which borrow money and put money in different assets, for example, a big large fund globally, what they will do is they will borrow money in yen in Japan at low interest rate and put that money into Indian equity, emerging market equity, Chinese equity, gold, silver, bond, US markets, everywhere, right? And they will keep it unhedged. Now, suddenly, what has happened? There is some increase in interest rate in Japan because of, and the Japanese currency has also appreciated by 10 percentage point. Now, these hedge funds, because they have borrowed in that currency and that currency is appreciated by 10%, they are having losses. And that is the reason they are selling off everything that they have acquired through that borrowed fund and returning back money to Japan. And that is the reason you are seeing lot of corrections happening. All these funds are selling right, left and center and trying to move money back to Japan. And that is the reason you see this volatility happening. This is called reversal of carry trade. Carry trade is borrowing at a place where interest rate is low and try to make money where you can make more money than the cost of money that you have. That is carry trade, which was happening for last 3 4 years. Because US may interest rates at 4%, India may it is 7%, Japan may it is 0.5. So people were borrowing there, here, putting money here. Now it is reversing. And because of this reversal, you are seeing huge volatility in the markets. What does not change is the fundamentals. So it does not change the fact that India is in a sweet spot. Hamara nominal GDP this year will grow at 10%. Indian companies are in good shape. Indian corporate balance sheet is good. India's fiscal deficit, India's current account deficit is in good shape. So all these things are not changing because of that. So if this volatility is happening, volatility is a very good friend of a long-term investor. A long-term investor should wait for these kind of volatile markets, use these opportunities to buy into good funds or good companies, sit tight and sit for long, and you will make very good returns. So please don't be afraid of this volatility. Use this volatility to make a solid portfolio for your long-term equity allocations. So ये तो हो गया market का बात. Let me share a couple of slides on the large cap funds which Rohan was talking about, जिसका NFO we have recently launched, and then I'll walk you through what large caps are, how are we differently positioning, and I'll also talk about our investment philosophy, which is InCube. So maybe I'll share a slide here. Rohan, is the slide visible clearly? Can you confirm? You just put it on full screen, sir. I have already done that. Okay. Is it on? ठीक है, we can see the slide, but मेरे इसको कैसे सर आप प्रेजेंट वाला क्लिक कीजिए ना. हाँ, एक मिनट किया. वो नीचे फिर नीचे वाला कौन? हाँ, वो स्लाइड शो. प्रेजेंट क्लिक किया है मैंने. ओके उसके बाद स्लाइड्स, एक बार मैं स्टॉप स्क्रीन करता हूँ. मे बी आई डू इट अगेन. ओके. Now is it visible full screen? Just a moment. We can go ahead, so we'll go ahead with this. ठीक है. Fine. So before we start, let me give you a brief background of Bajaj Finserv Asset Management. So we started about 1.5 years back. Our first equity fund was launched about 1 year ago around same time, which was the Bajaj Finserv Flexi Cap Fund with Mega Trend strategy. And we are about to complete 1 year.
In terms of AUM, our equity AUM currently stands at close to 7,000 crores, and total AUM of the fund, including fixed income, अगर हम बात करें तो we are close to 14,500 crores in AUM. We are one of the fastest growing AMC in India right now, and we have launched different products in equity based on certain exciting themes and with lot of differentiation. तो सबसे पहले जो हमने लॉन्च किया था वो हमारा था फ्लेक्सी कैप फंड, जो हमने लास्ट ईयर लॉन्च किया। उसका एयूएम है करीबन 3,200 करोड़। वो हमने मेगा ट्रेंड फिलोसफी पे लॉन्च किया था। उसके बाद हमने लॉन्च किया हमारा बैलेंस एडवांटेज फंड विद बिहेवियरल बायस। उसके बाद हमने लार्ज एंड मिड कैप लॉन्च किया, मल्टी एसेट लॉन्च किया, और अब हम लेके आए हैं लार्ज कैप फंड विद अ बिट ऑफ डिफरेंशिएटेड अप्रोच। तो उस पे बात करेंगे कि व्हाई लार्ज कैप नाउ एंड हाउ आर वी डिफरेंशिएटेड ओवर देयर। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल मूव टू दोस स्लाइड्स। हाँ, सो देखिए लार्ज कैप एज अ कैटेगरी, इफ यू लुक एट एक्टिव म्यूचुअल Just a फंड्स। moment, sir. Just a moment. I guess we'll have to fix because the slides are not moving on your screen. Maybe I will present. Just let me see. Should I do a stop sharing? Yes, yes, you can do stop sharing. I will. ठीक है, till the time Rohan Yeah, you try, can. yeah, I will. price this out, I'll just talk about large cap as a category. सबसे पहले तो देखिए, in a mutual fund world there are two categories, one is passive, one is active. Passive मतलब you buy the index and just do, it's a passive investing, there is no fund manager who takes a call, index में जो stock होंगे वो ले लेंगे और उसी weight में ले लेंगे। एक होता है active management, where the fund manager, after taking money in the mutual fund, tries to outperform or give better returns than the benchmark, which is an active fund. So हमारे लिए ये जो लार्ज कैप फंड जो हमने लॉन्च किया है, दैट इट इज अ एक्टिव स्ट्रेटजी। वी विल ट्राई टू मेक मोर रिटर्न्स देन द बेंचमार्क, लार्ज कैप बेंचमार्क। अब देखिए लार्ज कैप एज अ कैटेगरी इज वन ऑफ द बिगेस्ट कैटेगरी इन इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, एक्टिव म्यूचुअल फंड। ये बहुत बड़ी कैटेगरी है, काफी सारे पैसे इसमें डिप्लॉयड होते हैं, but this is also the most difficult category for any fund manager to outperform. I'll tell you a reason why. जैसा कि रोहन ने स्टार्टिंग में बताया कि देर आर ओनली 100 कंपनीज यू कैन चूज फ्रॉम एज अ फंड मैनेजर। अब इफ यू लुक एट द टॉप 100 कंपनीज, उसमें से रोहन यू कैन कीप द स्लाइड्स एज इट इज, आई लेट यू नो विच स्लाइड्स टू मूव, आई जस्ट टॉक राइट नाउ। सो आउट ऑफ दैट 100 कंपनीज, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि टॉप 10, 15, 20 कंपनीज उस 100 कंपनीज में ऐसी होती हैं जो कि आप कभी नहीं लेना चाहते, बिकॉज यू डोंट लाइक द मैनेजमेंट, आपको उनके गवर्नेंस स्टैंडर्ड पसंद नहीं है या उनकी बैलेंस शीट्स यू डोंट लाइक। सो यू आर लेफ्ट विद 80 कंपनीज, 80-85 कंपनीज। अब उस 80-85 कंपनी से अगर कोई एक्टिव फंड मैनेजर एक 40-45 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करेगा, तो इवेंचुअली वो क्या करने की कोशिश कर रहा है कि हर दो में से एक कंपनी उसे खरीदनी पड़ेगी। सो एवरी ऑल्टरनेट कंपनी इफेक्टिवली यू हैव टू बाय, यानी कि 80 में से अगर आप 40 स्टॉक्स आपको लेने हैं तो हर दो में से एक तो आपको लेने ही पड़ेंगे। तो क्या होगा कि यू विल बी वेरी क्लोज टू द बेंचमार्क विच इज निफ्टी, क्योंकि निफ्टी में भी 50 कंपनी है, आप ले दे के निफ्टी के आसपास पहुंच जाओगे। तो आपका जो पोर्टफोलियो बनेगा और जो निफ्टी का जो पोर्टफोलियो है, जो निफ्टी बेंचमार्क का, वो बहुत सिमिलर होगा। नाउ द प्रॉब्लम इज कि यू हैव वेरी सिमिलर पोर्टफोलियो, but as an active manager you have a higher expense ratio than the passive fund. So with similar portfolios and higher expense ratio, you cannot outperform the large cap benchmark, right? So it is very important for an active manager to differentiate from the benchmark. Benchmark से आपको हट के एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। अब लार्ज कैप में चूंकि सिर्फ 80 कंपनी है, आप अलग अलग कंपनी चुन के उसमें नहीं हट के बना सकते एक पोर्टफोलियो, आपको वेट चेंजेस करने पड़ेंगे। इसका मतलब कि आपको 25 से 30 कंपनी ही सिर्फ लेनी पड़ेंगी, लेकिन उनका जो वेट है, उनका जो जैसे 3% वेट है या 5% वेट है बेंचमार्क में, आपको अपने कन्विक्शन के हिसाब से हायर वेट्स लेने पड़ेंगे उसमें, और उसके हिसाब से आपको पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा।
हम एग्जैक्टली वही करने वाले हैं। तो हम ऐसा करेंगे इस फंड में कि हम 25 से 30 हाई कन्विक्शन स्ट्रैटेजीज को, हाई कन्विक्शन कंपनीज को पोर्टफोलियो में लेंगे। बेंचमार्क में 50 कंपनियां हैं, हम सिर्फ 25 से 30 कंपनी लेंगे, हाई कन्विक्शन बेस्ड अपॉन आवर रिसर्च, एंड देन वी विल क्रिएट अ पोर्टफोलियो विच विल बी डिफरेंट फ्रॉम द बेंचमार्क। एंड आवर प्रोबेबिलिटी और आवर चांसेस ऑफ बीटिंग द बेंचमार्क, यानी कि आपको बेंचमार्क निफ्टी से ज्यादा रिटर्न देने की कैपेबिलिटी हमारी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी उसकी वजह से। So that is how we are trying to do it. So let's go walk through the presentation. Maybe Rohan, आप next slide पे move कर सकते हैं. You want to move to the next slide? What are large caps? देखिए, जैसे कि रोहन ने भी स्टार्टिंग में बताया, लार्ज कैप कंसिस्ट ऑफ टॉप 100 कंपनीज बाय मार्केट कैप। ये रूल 2018 में आया था, जो कि सेबी ने डिफाइन किया है, जो कि रेगुलेटर है हमारे म्यूचुअल फंड्स के। उन्होंने बोला है कि टॉप 100 कंपनीज ही लार्ज कैप कंपनी होती हैं। अब वो टॉप 100 कंपनीज का लिस्ट एवरी 6 मंथ्स को से भी रिवाइज भी करती है, कि ऐसा हो सकता है कि कुछ कंपनीज के स्टॉक परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छे हो तो वो लार्ज कैप बन जाए, और कोई चीज मिड कैप बन जाए। तो वो चर्न थोड़ा, एक दो कंपनियों का चर्न होता है हर 6 महीने में, लेकिन एसेंशियली दिस इज द लार्ज कैप। सो टॉप 100 कंपनीज आर लार्ज कैप, 101 to 250 आर कंसिडर्ड टू बी मिड कैप, यानी मिड कैप 150 कंपनी है, एंड 250 फर्स्ट से जो पीछे की कंपनी है वो स्मॉल कैप मानी जाती है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करिए प्लीज। हाँ, देखिए, जनरली ये रिस्क रिटर्न मैट्रिक्स होता है जब आप देख रहे हो। तो जो आप वाई एक्सिस देख रहे हो वो है पोटेंशियल रिटर्न, कि आप रिटर्न कितना कमाना चाहते हो, और जो आप एक्स एक्सिस देख रहे हो यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, वो है रिस्क। सो लार्ज कैप फंड्स आर, जो होते हैं, जो लार्ज कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, दे आर पोजिशनड एज लो रिस्क बट पोटेंशियली अ लिटिल लोअर रिटर्न। नाउ व्हाई लो रिस्क इज समथिंग व्हाट शुड क्लियरली अंडरस्टैंड। I'll give you a very simple example. देखिए, let us talk about three people standing out in the in the open. जैसे कि एक 5 साल का बच्चा है, एक 18 साल का या 15 साल का एक लड़का है, और एक 35-40 ईयर ओल्ड नौजवान है जो बाहर खड़े हैं। अगर बाहर का वेदर, यानी कि आप मैदान में खड़े हैं, बाहर का वेदर इज गुड, तो सभी लोग अच्छा करेंगे, और छोटा बच्चा सबसे तेज भागेगा। यानी कि in a environment which is very good, it is the small kids who run very fast, right? But आप समझिए कि if the weather is very bad, right, if there are lot of potholes, तो आप देखेंगे कि जो 35-40 ईयर ओल्ड मेल है, जिसने दुनिया देखी है, जो समझदार है, वो लाइफ में सबसे अच्छा करेगा जब मॉनसून हो या वेदर खराब हो। इसी तरह से आप बड़ी कंपनियों के बारे में सोचें। बड़ी कंपनियां जो होती हैं, जो कि बड़ी हो चुकी हैं, जिनकी बैलेंस शीट्स अच्छी हैं, जो जिनका 30-40 ईयर्स का हिस्ट्री है, एंड जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं, in an environment where things are not right, things are volatile, these companies have a survival bias. These companies can survive downturn. आप हमेशा, अगर आप लास्ट 20 ईयर्स का हिस्ट्री देखें इंडिया का या ग्लोबली भी 30-40 ईयर्स का, in an environment when there is an economic downturn, it is the large cap which give you better return, because these companies are, have stronger balance sheets, better managements, and have seen business cycles, and they are industry leaders. So they will always survive better and preserve your capital better, right? So इसीलिए large cap funds are considered to be safer within all the equity category. ऑप्टिकली आपको ऐसा लगेगा कि शायद वो रिटर्न थोड़ा कम देते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न शायद वो सबसे बढ़िया देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, देखिए, हमारी स्ट्रेटेजी, हम इस एक और जो कॉन्सेप्ट हम सोच रहे हैं और जो हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चैंपियंस ऑफ कॉर्पोरेट इंडिया। अब देखिए, ये जो समय है, अगर आप में से लोग मार्केट में हैं और काफी समय से मार्केट में हैं, आपने देखा होगा बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि ये समय बिल्कुल वैसा है जैसे 2005, 6, 7 का समय था इंडिया में, जब बहुत बड़ी एक बुल मार्केट चल रही थी उस समय बाजार में। जो लोग थे उस समय बाजार में वो जानते हैं। उस समय और इस समय में बाजार की जो इक्विटी मार्केट्स के जो रिटर्न है, उसके अलावा एक चीज और कॉमन है। उस समय भी बहुत सारी कॉर्पोरेट्स नए नए फैक्ट्रीज डाल रहे थे, गवर्नमेंट बहुत सारी इंफ्रा पे स्पेंडिंग कर रही थी, रोड्स, ब्रिजेस, पावर इक्विपमेंट, वो सब बहुत काम हो रहे थे। ऐसा ही समय 10-15 साल बाद अगेन वी आर सीइंग इट अगेन हैपनिंग इन इंडिया राइट नाउ। सो कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इन कैपेसिटीज, सेटिंग अप फैक्ट्रीज, न्यू प्लांट्स, न्यू बिजनेसेस, ये सब हम दोबारा देख रहे हैं, वो सब हो रहा है।
अब ऐसे समय पे हाउ टू चूज विच कंपनी विंस, राइट? ये जो होता है ना, वो बहुत सिंपली एक तरीका होता है कि द कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कॉस्ट ऑफ सेटिंग कैपेसिटी, जिस कंपनी की सबसे सस्ती होगी ना, एंड में वही कंपनी जीतेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप और मैं दोनों एक सीमेंट का प्लांट लगाने की कोशिश करें, वी आर ट्राइंग टू सेट अप अ सीमेंट प्लांट ऑफ 1 मिलियन टन। इफ आई पुट दैट कैपेसिटी, थ्योरेटिकली अज्यूम, 1 लाख, मैंने वो कैपेसिटी 1 लाख रुपए में डाली और रोहन ने वही सेम कैपेसिटी को लगाने में 1.5 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो मैं अपना माल, अपना सीमेंट सस्ते में बेच के भी उनसे ज्यादा रिटर्न कमाऊंगा, बिकॉज उन्होंने कैपेसिटी महंगी लगा दी है, राइट? सो अगर हम कंपनीज, लार्ज कैप कंपनीज को सेलेक्ट करते हुए ये कैटेगरी को यूज करें कि भाई कौन सी कंपनी में ये कैपेबिलिटी है कि वो सबसे सस्ता लोन ले सकती है, जिसका कैपिटल, इक्विटी कैपिटल सबसे सस्ता हो बिकॉज उसका रिटर्न ऑन इक्विटी हमेशा से अच्छा रहा है, या फिर दिस कंपनी हैज द कैपेबिलिटी ऑफ सेटिंग अप प्लांट विच इज द चीपेस्ट। तो अगर हम इस तरह के चैंपियंस कॉर्पोरेट इंडिया से ढूंढ के ले आए and we set up a portfolio, create a portfolio of these type of companies, you will have your winners in the large cap space, and this is what we are talking about in this strategy. Next slide. Maybe you can move these slides, Rohan, these are not very important, please move ahead. हाँ, आगे चलिए, मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट। हाँ, जस्ट मूव अहेड, एक और, हाँ बस इधर रुकिए। हाँ, बस जस्ट स्टॉप हेयर, स्टॉप दिस वन। अब एक जो पुशबैक है जो इन्वेस्टर्स से आता है, वो है कि लार्ज कंपनीज आर लार्ज इनफ एंड they cannot grow as fast as small companies, so why should you put your money in large caps? Now this is the list of some top 10 Indian large cap companies and top 10 market global large cap companies या US की large cap companies. Now look at the list of the US top US कंपनीज। माइक्रोसॉफ्ट, उसका मार्केट कैप है 3.4 ट्रिलियन डॉलर्स। ये भारत की जीडीपी से भी बड़ा मार्केट कैप है उसका। इनफैक्ट द टॉप 3 कंपनीज इन दैट लिस्ट, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल एंड Nvidia, have market cap which is either equal to or bigger than India's GDP, राइट? अब लेकिन उन तीनों कंपनीज का आप रिलेटिवली वहां के स्मॉल कैप के रिटर्न्स के साथ कंपेयर करेंगे, दीज 3 कंपनीज फॉर लास्ट 3-5 years हैव आउट परफॉर्म्ड देयर कैटेगरी, देयर स्मॉल कैप्स, डिस्पाइट बीइंग लार्ज कैप्स। तो ये जो सोच है कि लार्ज कैप्स कैन नॉट गिव यू इनफ रिटर्न्स एज मिड कैप्स और स्मॉल कैप, इट इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, राइट? बिकॉज ये सारी कंपनियां तो भारत की जीडीपी से भी बड़ी हैं, तो फिर ये इतना अच्छा रिटर्न कैसे दे रही हैं? क्योंकि it is the market cap is not important, large market cap is not important, the important point is कि अपॉर्चुनिटी कितनी है उस कंपनी के पास और ग्रो करने की, राइट? अब लेट्स लुक एट टॉप 10 कंपनीज इन इंडिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करिए आप, look at the opportunities on green hydrogen that they are looking at, lot other things that they are looking at, they have huge opportunity and their market cap is just 200 billion dollar, which is less than I think 5-7% of Microsoft right now. uh, TCS. TCS works in IT services. Globally, IT services is $1 trillion opportunity. HDFC Bank, it has huge opportunity, right? So the size of the opportunity, if it is there, these companies can continue to grow and continue to deliver results. एक और तरीके से मैं आपको इस चीज को समझाता हूँ। लेट्स गो बैक टू 2003 व्हेन टीसीएस गॉट लिस्टेड। जब टीसीएस 2003 में लिस्ट हुई थी, लिस्ट होते ही वो लार्ज कैप बन गई थी। लिस्ट, वो तब से लार्ज कैप है, और लिस्ट होने के बाद उसने 5 साल, 10 साल, 15 साल तक उसने भारत के स्मॉल कैप कैटेगरी को आउट परफॉर्म किया है। लुक एट एचडीएफसी बैंक व्हेन इट बिकेम अ लार्ज कैप, एंड उससे आप कंपेयर कीजिए उसका रिटर्न्स vis-a-vis द स्मॉल कैप इंडेक्स का रिटर्न, इट हैज आउट परफॉर्म द स्मॉल कैप इंडेक्स, राइट? So if you pick up right companies and if the opportunity size is large enough, you should not worried whether it is large cap, mid cap or small cap. That is the point that I'm trying to make. एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। नाउ हमारे लिए ये कंपनीज लार्ज कैप है। अब आप सोचिए कि कोई फॉरेन इन्वेस्टर है। नाउ एफआईज इंडिया में 14% ओन करते हैं इंडियन इक्विटी को। लेट्स लुक एट फ्रॉम अ फंड मैनेजर हु मैनेजेस अ ग्लोबल फंड, एंड वो ग्लोबली स्टॉक पिक करता है। वो माइक्रोसॉफ्ट भी ले सकता है और वो भारतीय एयरटेल भी ले सकता है। तो अब आप इस चार्ट को देख के मुझे बताइए कि जब वो भारतीय एयरटेल लेगा अपने पोर्टफोलियो में और उसके पास अगर माइक्रोसॉफ्ट है ऑलरेडी, तो वो मिड कैप ले रहा है कि लार्ज कैप ले रहा है?
भारती का मार्केट कैप है $100 बिलियन, माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट कैप है $3.4 ट्रिलियन, उससे 34 टाइम ज्यादा, 34 टाइम्स। तो उसकी नजर में तो ये मिड कैप है, आपके लिए भले वो लार्ज कैप हो, उसके लिए तो वो मिड कैप है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये लार्ज कैप है? करेक्ट। सो ये हमारे सोचने का तरीका है, जो हमें ऐसा लगता है कि लार्ज कैप ज्यादा रिटर्न नहीं देते। तो ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि लार्ज कैप्स व्हेन पिक्ड राइट एंड इफ दे हैव गुड अपॉर्चुनिटी साइज दे कैन गिव यू इनफ रिटर्न्स। मे बी वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आगे चलिए, थोड़ा और आगे आप इसमें एक, हाँ इस ये एक इंटरेस्टिंग है, पता नहीं वो दो स्लाइड्स में दिखाना चाह रहा था जो मेरे प्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, मूव। नहीं, इसमें नहीं है, तो मे बी आई जस्ट एक्सप्लेन यू दो स्लाइड्स सिंस वी आर अनेबल टू शो यू दो स्लाइड्स। तो हमने क्या किया था, हमने लास्ट 20 ईयर्स का एक डेटा एनालिसिस किया। लास्ट 1.5 ईयर्स में हमने ये देखा है कि मिड कैप्स हैव आउट परफॉर्म लार्ज कैप्स, मिड कैप ने आपको लार्ज कैप से ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया, सिमिलरली स्मॉल कैप्स भी। अब लास्ट 20 ईयर्स का जब हमने डेटा एनालाइज किया, जो कि हमारे दूसरे प्रेजेंटेशन है, हम अनफॉर्चुनेटली आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, तो हमने ये पाया कि वेन एवर अ मिड कैप कैटेगरी और मिड कैप्स आउट परफॉर्म द लार्ज कैप्स बाय close to 35-40% in 1.5 year time, in the next 1.5 year period you will see a severe underperformance by mid caps over large caps। और ऐसा लास्ट 5 बार हो चुका है लास्ट 20 साल में। सिमिलरली अगर कोई स्मॉल कैप कैटेगरी लार्ज कैप को 50% से ज्यादा आउट परफॉर्म करती है, जो कि लास्ट 1-1.5 साल में हमने देखा है हुआ है, तो स्मॉल कैप कैटेगरी अगले 1-1.5 साल में लार्ज कैप कैटेगरी को 1 से 1.5 इतने ही सीवियरली अंडर परफॉर्म करती है। तो कहने की बात यह है कि हम सभी ने स्मॉल कैप्स में, जहां हमसे ज्यादातर लोगों ने, वी हैव पुट अ लॉट ऑफ मनी इन स्मॉल कैप्स एंड वी हैव मेड वेरी गुड रिटर्न्स। बट देखिए, इफ यू वांट टू बी वेल्दी एंड रिच, मेकिंग मनी इज वन थिंग, प्रिजर्विंग मनी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड इफ यू वांट टू प्रिजर्व वेल्थ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to make money and preserve it by making money in mid and small cap. You have made your money, that is very good. Move that money and protect that money to large caps. Large caps are much better place to protect your money compared to large caps. आप मेरे से ये भी बोल सकते हैं, why not move that money to cash or FD, right? But fact ये है कि do you want to miss out and completely exit the market? Large caps give you a sweet opportunity to be in the market and still protect your wealth. Volatility large cap में भी होगी, लेकिन large cap में mortality नहीं होती। लार्ज कैप कंपनीज, आप देखेंगे कि वही लार्ज कैप कंपनी सरवाइव करती जाती हैं, जबकि मिड कैप स्मॉल कैप की हर तेजी में नए सेट ऑफ कंपनीज आ जाती हैं ऊपर, और पीछे वाली जो प्रीवियस साइकिल की कंपनीज वापस भी नहीं आती। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन यू वांट टू प्रिजर्व वेल्थ, इफ यू हैव क्रिएटेड वेल्थ इन मिड एंड स्मॉल कैप, मूव टू लार्ज कैप। रोहन, यू कैन मूव टू इनक्यूब। आई जस्ट स्पेंड 2 मिनट्स ऑन इनक्यूब फिलोसफी। आगे चलिए, these slides are not important। हाँ, बस इधर रुकिए। सो देखिए, दिस इज आवर इन्वेस्टमेंट फिलोसफी विच वी कॉल्ड इनक्यूब। नाउ व्हेन वी, जब हमने सेटअप किया, व्हेन वी सेटअप द म्यूचुअल फंड, तो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी थॉट ऑफ वाज कि हाउ डू वी प्लान टू आउट परफॉर्म द बेंचमार्क, कि हम किस तरह से बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करेंगे, बिकॉज दिस इज द बेसिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनी फंड मैनेजर और एनी इन्वेस्टमेंट हाउस, कि हाउ डू यू गिव यू, हाउ द टीम गिव्स यू मोर रिटर्न्स देन द बेंचमार्क। देखिए, सबसे इजी तो किसी भी इन्वेस्टर के लिए होता है कि वो जाके निफ्टी खरीद ले। निफ्टी का इंडेक्स आजकल बाजार में अवेलेबल है, यू गो एंड बाय। व्हाई डू यू नीड एन एक्टिव मैनेजर? बिकॉज एक्टिव मैनेजर्स विल ट्राई टू गिव यू मोर रिटर्न्स, राइट? एंड इसी वजह से वो फीस लेते हैं। बट हाउ डू वी प्लान टू गिव यू मोर रिटर्न्स? बिकॉज देर आर ऑलरेडी 41 म्यूचुअल फंड हाउसेज, 400 से ज्यादा पीएमएस हैं, 1600 से ज्यादा एफआईज है बाजार में। तो हम ऐसा क्या करेंगे कि हम आपको बोल सकते हैं कि हम आपको ज्यादा रिटर्न दे पाएंगे कंसिस्टेंटली? तो देखिए, हाउ डू एन एक्टिव मैनेजर गिव यू मोर रिटर्न, उसमें होता है एक कॉन्सेप्ट होता है इंफॉर्मेशन एज, यानी कि एज अ इन्वेस्टमेंट टीम वी डू रिसर्च, वी मीट कंपनीज, वी रीड एनुअल रिपोर्ट्स, और हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आगे जाते हुए विच कंपनीज विल डू वेल। दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन एज, वो हम भी करेंगे। लेकिन बिकॉज नाउ ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू एवरी वन, राइट? सो दिस कैनॉट बी द ओनली रीजन टू आउट परफॉर्म।
तो हमने क्या किया है, हमने दो लेयर्स और क्रिएट किए हैं हमारी टीम में। एक है क्वांटिटेटिव एज। सो हम बहुत सारे हमारी एक क्वांट टीम है जो कि हम बहुत सारे स्क्रीनर्स और क्वांट के मेथोडोलॉजीज को यूज करते हैं हमारे एनालिसिस में, तो वो हमें एक एज देता है। एंड तीसरा है बिहेवियरल एज, यानी कि हम मार्केट से ज्यादा अच्छा बिहेव कैसे करें। नाउ आई आस्क दिस सिंपल क्वेश्चन टू एवरीवन, व्हाट इज बिहेवियरल एज? तो मैं आपको एक इजी एग्जांपल से समझाता हूँ। आज अगर मैं चार लोगों को मिलूं और उन लोगों को मैं कन्विंस करने की कोशिश करूं कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, कर दीजिए प्लीज, तो चार के चार लोग कन्विंस हो जाएंगे, करेक्ट। लेकिन अगर मैं यही कोशिश मार्च 2020 में करता, कोविड बॉटम में, तो मेरे से कोई भी कन्विंस नहीं होता कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें, राइट। दिस इज कॉल्ड ग्रीड एंड फियर। उस टाइम फियर था, आज ग्रीड है। As a behavioral edge, we have created tools so that our team or us do not fall into the trap of greed and fear. So our models help us as an individual or as a human, we don't fall into the trap. In fact, we try to benefit from those type of movements by the market. And this is what behavioral edge is. So we use three edge, which is information edge, quantitative edge, and behavioral edge to give you the outcome. So if you look at our returns in some of the funds that we have already launched, you'll clearly see that demarcation of our funds have been delivering decent results to the investors. सो ये हमारा कॉन्सेप्ट है लार्ज कैप का, ये हमारा इन्वेस्टमेंट फिलोसफी है, एंड दिस इज आवर इक्विटी मार्केट आउटलुक। आई विल बी हैप्पी टू टेक एनी क्वेश्चंस दैट anybody has, any listeners have. Rohan, up to you. Please take it forward. Okay, sir. Thank you so much. I will just take back the slide to the first slide. While I do that, I have a sincere request to our audience. If they have any questions for Saurabh sir, please go ahead and ask. Meanwhile, sir, I'll ask a question. There are a lot of young investors who are watching us and who are our viewers as well. So, what is your advice, and how should they go about investing, and how should they consider this as a part of their portfolio? And how should they go about it? Matlab, SIPs, lump sums, what is the ideal path? What you would recommend? देखिए, इन्वेस्टिंग में ना, देर इज अ फास्ट फूड एंड देर इज अ स्लोली कुक्ड फूड, राइट? While most of the youngsters love fast food, but you can fall ill after some time if you continue to eat fast food. Very fast food. So don't try to make too fast return in equity markets. Give it some time, let the compounding work. These old philosophies of keeping money for 3 years, 5 years really helps investors. uh, I think a lot of young investors have been lucky कि last 3 साल में markets have not shown its true colors of volatility, but that is not the true nature of the market. Markets are volatile by nature. You need to protect your capital first. If you can protect your capital, you will make money. So it is very important. Give the market some time. Try to allocate your money between large cap, mid cap, and small cap, and give it some time for compounding, right? So just take it a little slow and take it like a slow cooked food which is good for your health, and not take it like a fast food which sounds tasty or looks tasty and you feel good about it, but it can make you ill. Right, sir. Sir, I am just browsing through the questions. Uh, well, you already spoke about the portfolio like small cap, mid cap, and large cap. One Ashik has a question that how would you recommend with respect to percentage wise? How would you break up particular portfolio? कि 20%, 30% यहाँ पे रखिए, डेट में इतना रखिए. How would what would you recommend? Hmm. देखिए, anybody who has an investment horizon of more than 3 to 5 years and does not require that money right now has to be more and more into equity, बिकॉज इक्विटी गिव्स यू द बेस्ट कंपाउंडिंग। ठीक है, तो आपका टाइम होराइजन जितना लंबा होता जाता है उतना ज्यादा आप इक्विटी लेते जाइए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इफ यू आर ऑलरेडी एन इन्वेस्टर, यू हैव मेड सम मनी इन मिड एंड स्मॉल कैप, ट्राई टू रिएलोकेट दैट मनी इनटू लार्ज कैप टू प्रोटेक्ट दैट मनी। राइट नाउ इफ यू आर लुकिंग एट इन्वेस्टिंग, यू आर स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग राइट नाउ, I think mid and small cap are a place which has a lot of froth right now. I think one should be careful over there and try to park your money in large cap. See the market how it moves, and then maybe you can reallocate when the market's correct on mid and small side. Reallocate that money to mid and small cap. But if you're starting right now, I think large cap is a much safer space to start right now instead of mid and small cap.
Okay. Uh, Thank you so much, sir. Well, I guess our viewers do not have much questions. With this, I'll just wrap up the session. I would first of all wish Bajaj Finserv AMC all the best for this NFO. I hope they do well. Friends, I would request you all to please visit our website on bajajfinserv.in. We have mutual fund section over there where you can explore the details about this NFO and make investment. We have an online journey which is available on our website. You can just Google it, bajajfinserv.in, and you will and comma mutual funds, and you will be able to reach our website. Uh, at the same time, if you have any queries, any questions, you can reach out to us through social media. You can post your comment. This video will be live for a while, and your questions will reach us, and we'll definitely would reach back and help you with all your queries. It could be with respect to not only this fund but also making transaction, any hand holding required. We'll always be there for you in your wealth creation journey. Thank you, Saurabh sir, for being here. It was a very nice session. You actually explained everything in a very simple manner, which was really nice. Even I learned a lot today. How you explain the difference, how you are going to create that alpha with respect to if it's an index fund, how you explain the concentrated approach which this particular fund is going to use, the in-cube philosophy of Bajaj Finserv AMC. And with this, I like to wish you all the best. I hope this NFO, you are able to collect a lot of money from all the investors and help them create wealth. And what you quoted right now, help them protect their wealth at the same time, considering this being a sweet spot for the complete Indian economy for and also for our investors to create wealth for themselves. I would also promise all our viewers that Bajaj Finserv Limited would like to be part of your journey. uh, then let it be ups and downs, we like to be there, help you and support you. So any few words before we end the session? Yes, I think. Thank you, Rohan, for the kind words, and I hope I was able to explain how we think and how we plan to use people's money to create wealth. देखिए, a couple of things. It is very easy to get excited by faster returns in small period of time. Give your investments a little more time. Let's be a little more patient on our portfolio. That is point one. Point two is relative to mid and small caps. I think large caps is a place where you don't even miss equity, but you can protect your wealth going forward. So it's very important to look at large cap also as a category. It is very important to look a bit contrarian in equity markets. जब सब लोग मिड कैप स्मॉल की बात करते हैं तो आप लार्ज कैप पे देखना चाहिए, और जब सब लोग लार्ज कैप की बात करने लगे साल 2 साल के बाद, जब आपके अच्छे रिटर्न्स बन गए हो, तब आप मिड एंड स्मॉल की तरफ बात कीजिए जब कोई उस तरफ नहीं देख रहा हो. कॉन्ट्रेरियन अप्रोच, अगर इफ यू कीप, यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी इन इक्विटी रिटर्न्स. Yes, sir. Thank you so much. I hope all the viewers listen to sir and make wealth. I'll also make wealth, and we as Bajaj Finserv will be there with you to help you create wealth. Please visit our website, bajajfinserv.in. We have mutual fund section over there, and you can please explore this opportunity and invest in Bajaj Finserv AMC's large cap fund. Thank you, sir. With this, I end this session. Thank you, viewers, again. Good evening again, and thank you so much for joining us. Bye to all. थैंक यू.